Hello students, this is Vikas Jana. Welcome to my YouTube channel PRAPTI Academy, and this is our second class about education. प्रथम क्लास में कौन पढ़ते छुआ जे शिक्षार अर्थ, शिक्षार संकीर्ण अर्थ, व्यापक अर्थ, शिक्षार उत्पत्तिगत अर्थ एवं शिक्षार विभिन्न दार्शनिक मानकर संज्ञा, जमीन कि पाश्चात्य दार्शनिक मानकर शिक्षा प्रति संज्ञा एवं भारत दार्शनिक मानकर शिक्षा प्रति संज्ञा कौन सब देइछन्ती से विषय में आलोचना कर सकते। आज हम कौन पढ़िबा शिक्षार टाइप्स पढ़िबा, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षार प्रकार कले कौन बुझे? शिक्षा तो शिक्षा आम जीवन सारा किसी ना किसी शिखुचे, तो कौन शिक्षार प्रकार आवश्यकता कौन? यह आवश्यकता तार जे आम तो बहुत किसी जिनिस शिखुचे, सब जिनिस गोटे प्रकार नुह, तो समस्त शिक्षा को आम तीन भाग में विभक्त कर भाग करने प्रक्रिया को कौन कहते? टाइप्स। मुख्यतः हम शिक्षा को तीन भाग में विभक्त कर कौन कौन ना फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। आनुष्ठानिक शिक्षा, अनानुष्ठानिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा। सो प्रश्न आसुची आनुष्ठानिक शिक्षा कौन बा फॉर्मल एजुकेशन आम कहले कौन बुझे? सो फॉर्मल एजुकेशन कौन करे आम साधारण भाव बुझी पार जब आम अनुष्ठान माध्यम जो शिक्षा दौचे बा शिक्षा दान जो मुख्य माध्यम अनुष्ठान रोचे सेटा हूँ कौन आनुष्ठानिक शिक्षा। अर्थात इट फॉलोज पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन। जो आनुष्ठानिक शिक्षा कौन करे निर्दिष्ट नीति नियम को अनुसरण करे। देयर आर फिक्स टाइम टेबल, अर्थात पाठ पढ़ा निर्दिष्ट टाइम टेबल रही है, as well as there are fixed academic curriculum for the students। एवं शिक्षार्थी मान निर्दिष्ट प्रकार पाठ्यक्रम रही है। शिक्षार्थी कौन पढ़े, केते समय पढ़े, प्रत्येक क्लास को केते मिनिट लेखा दि जाव, गोटे यूनिट कवर करने गोटे टीचर केते समय नब, दिस इज फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी। निर्दिष्ट शिक्षानुष्ठान अर्थ कौन जो माने परिचालक रही से कंट्रोल करते। देयर फिक्स्ड टाइम टेबल, फिक्स्ड करिकुलम। ओके, दिस इज फॉर्मल एजुकेशन। इट रिक्वायर्स डायरेक्ट एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। ये कौन करे ना शिक्षक एवं शिक्षार्थी मध्य डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर। शिक्षार्थी किसी समस्या थी से डायरेक्ट पचारे सर मुझे जिन बुझी पार, शिक्षक कौन करेंगे डाउट क्लियर करेंगे। ओके, दिस इज डायरेक्ट इंटरेक्शन। ओके, एंड देयर आर आल्सो प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। जेते बेले गोटे वर्ष पाठपढ़ा तांकर सरीबो बा 2 वर्ष पाठपढ़ा सरीबो बा 3 वर्ष सरीबो, तांको गोटे सर्टिफिकेट दे जे से माने ए विषय रे कृतित्व हासिल कर। ओके, एंड देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, तुमको निर्दिष्ट टाइम रे कॉलेज दिया पड़िबो, केति समय क्लास करे पड़िबो। दिस इज फॉर्मल एजुकेशन। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कौन फॉर्मल एजुकेशन बोले हमें कहूचे। बुझेला फॉर्मल एजुकेशन कौन बा अनुष्ठानिक शिक्षा कौन, तापर हम कौन बुझिबा नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन, अण अनुष्ठानिक शिक्षा कहले कौन बुझुचे। अनाश्रय माने सेटा कौन प्रकार निर्दिष्ट गोटे अनुष्ठान द्वारा परिचालित नुह। एठी कौन होची ना इट फॉलोज पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन। ये मध्य अनुष्ठानिक शिक्षा परि निर्दिष्ट नीति एवं नियम को अनुसरण करूची। देयर फिक्स्ड एकेडमिक करिकुलम। एठी कौन होची निर्दिष्ट प्रकार रे गोटे पाठ्यक्रम रहउची, सेटा कौन पढ़िबे कौन नै। ओके, बट देयर आर फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम टेबल, जोटा कि एकर मुख्य विशेषत्व। एठी कौन होची शिक्षार्थी पे फ्लेक्सिबिलिटी अछि, तांको सुविधा मुताबिक से माने क्लास की एक्सेस कर परिबे। जेमिति कि सपोज तुमरो के मैट्रिक पर प्लस 2 करछ, प्लस 2 रे के सिटी करे पे चाहिलो, सिटी कर देलो, चाकरी खंडी पाई गेलो, भगवान को दयारे तुम खण कोन चाकरी खंडी पाई जाइछो, जोटा कि वर्तमान जुग रे पाया भारी कष्ट। जदि पाई जाइछो
तमे चाहूछ जे समस्त मनुष्य कौन जानती आगु गोटे बढ़िया जे मत आज 10,000 मिलूची आर वर्ष 5 वर्ष पर मत 20,000 मिलूनी तो आगु को बढ़िया कौन हम ना तुमको आहरी नुआ नुआ क्वालिफिकेशन दरकार अधिक क्वालिफिकेशन दरकार तो क्वालिफिकेशन दरकार कौन आम जाने ना पाठ पढ़ा पड़ो कौन कर स्कूल जाए पड़ो कॉलेज जाए पड़ो एटा तो जानते ना यूनिवर्सिटी जाए पड़ो किंतु तुम चाकरी करथिबो पुणी यूनिवर्सिटी जीव केमती इधर एनी पॉसिबिलिटी बा कॉलेज केमती जीव तुम आडे चाकरी करबो ना कॉलेज क्लास करबो तुम माने पहुचो पॉसिबल की नुहे तेणु गवर्नमेंट कौन कला जो शिक्षार्थी मानक आगु को बढ़ियार अच्छी चाकरी करने सत्वे से प्रमोशन चाहती आगु को किसी अचीव कर चाहती गोटे सुविधा दिगला तुम्हें तुम हिसाब से जिते तुम पार तुम क्लास टी कर तुम कोर्स टी कर दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन एटी भी निर्दिष्ट नियम कानून अच्छी एटी भी निर्दिष्ट सिलेबस अच्छी करिकुलम अच्छी बट टाइमिंग रे फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी ओके सपोज गोटे छुआ कॉलेज रे जाउची बा चाकरी करूची से रात 10टा पर फ्री हैला ता काम दाम सरी ऑफिशियल काम सरी फ्री हैला सकाले जे मोटे क्लास टे कर दे पॉसिबल अछि कि जेमति नॉर्मल स्कूल तुम कॉलेज जाउचो जेमति आसथो 10टा रु 3टा 4टा जे रहउचो पाठ पढुथिबो सेमति गोटे छुआ कर देबो असंभव तेणु से रात 10टा पर गला वीडियो अपलोड हेइथिबो जहा क्लास हेइछि से वीडियोटा देखिला तार नोट्स बने देबो तार मटेरियल से प्रोवाइड कर दिया जिवो एटा तो कोन नॉन फॉर्मल एजुकेशन It did not require any direct and face-to-face interaction between student and teacher. ये कौन करे शिक्षक एवं शिक्षार्थी में कौन सा डायरेक्ट इंटरेक्शन रिक्वायर करे नहीं जे शिक्षक आसीबे शिक्षार्थी पढ़ेबे शिक्षार्थी ता डाउट पचारिबो एटा एते संभव न थाए कोठी अनानुष्ठानिक शिक्षा रे एंड इट कौन वे देयर आर आल्सो प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द ईयर जेतने तुम पाठ पढ़ाटी सरी दिबो 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो 5 वर्ष जिते भी हो तुम पाठ पढ़ार कोर्स जी समय अच्छे तुम कौन मिल जमी अनुष्ठान शिक्षा लास्ट गोटे सर्टिफिकेट मिलूला जमी तुम +2 कर मैट्रिक करके आसो तुम कौन गोटे सर्टिफिकेट पाई मैट्रिक रे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जमी मैट्रिक तुम सर्टिफिकेट खंडे पाइच अनुष्ठानिक शिक्षा अनुसार ये भी से अनुसार तुमको पाठ पढ़ा शेष में गोटे सर्टिफिकेट दौर तो फॉर एग्जांपल कौन रहा ना डिस्टेंस एंड ओपन इग्नो कहते इग्नो माने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एटा केबे थिला रे जन लिखिबे चाहतो लिखिदेबो 1985 1985 मसिया रे इग्नो एस्टाब्लिश कराइଥିଲା काहेकि ना दूर एवं संचार शिक्षा जहार जेते संभव से जो क्लास करे चाहूची केमि से सुविधाटी पाइबो ए सुविधाटी देबा पई इग्नो एस्टाब्लिश हेतला ओके दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन आउ गोटे रहिला इनफॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल कोन ना सियो आज कॉलेज इनफॉर्मल ड्रेसेस बा से इनफॉर्मल बिहेव कोच अर्थ कोन गोटे आनुष्ठानिक बिहेव नहीं अनानुष्ठानिक भी नहीं अनौपचारिक माने तुम तुम हिसाब से पाठ पढ़ो तुमको जिते सुविधा होला तुम बाटरे घाटरे सांग साथी रे घरे खेल पड़िया रहू बा हमर कोन न्यूज पेपर रो रेडियो रो एनी हाउ एनी वेयर वी लर्न जेतला में जे कोन से जगह भी हम जे कुछ सिखुचे दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थात देयर आर फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग एंड स्टूडेंट्स कैन लर्न बाय देयर ओन डेली एक्सपीरियंसेस दैनंदिन जीवन एक्सपीरियंस रु तने कोन कर परिबे पाठ बा लाइफ विषय सिखि परिबे दिस इज इनफॉर्मल एजुकेशन लाइक फ्रॉम रेडियो टीवी न्यूज़पेपर फ्रॉम होम एंड फ्रॉम फ्रेंड सर्कल न्यूज़पेपर किसी भल आर्टिकल आसी ताको पढ़िले ताको नोट डाउन कर देले दिस इज आल्सो एजुकेशन टीवी रे किसी भल गोटे नुआ जिंस सिखिले ताको मध्ये लिखि देले दिस इज आल्सो एजुकेशन बर्तमान सोशल मीडिया ट्रेंडिंग रे भल किसी हम आर्टिकल्स आसी भल कोर्स आसी हम ताको सेव करछे परे जे जन फ्री हो ताको मध्ये एक्सेस करछे दिस इज आल्सो एजुकेशन okay so all these elements are included under the informal education category clear what is formal what is non formal what is informal तो हम ए तीनोटी कैटेगरी हम जदी बुझिया पे चेष्टा करबा मोडा टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिस अथवा कंपैरेटिवली वे तो हम बुझिबारे जे फॉर्मल एजुकेशन कोन नॉन फॉर्मल कोन एवं इनफॉर्मल कोन एवं तार लक्ष्य सब कोन तुम एटा देखिले बुझि परबे सो एम्स कोन रहला तारो
ना फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन अनुसार एम्स कौन ना दिस इज प्री डिसाइडेड दिस इज फिक्स्ड कौन पढ़ा जीवो कितने समय पढ़ा जीवो कितने टाइम लगे सिलेबस रे पे ओके दिस इज प्री डिसाइडेड ऑलरेडी ताको डिसाइड करा दिया नॉन फॉर्मल एजुकेशन आल्सो दिस इज प्री डिसाइडेड सेम थिंग जेमती फॉर्मल एजुकेशन रे पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट भाव में डिसाइड कर दिया जायछि नॉन फॉर्मल मध्य पाठ्यक्रम को क्लास टाइमिंग को डिसाइड कर दिया जायछि बट इन दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी कोठी नॉन फॉर्मल बट इनफॉर्मल कोन नॉट बी डिसाइडेड एठी कोनोसी भाव में सिलेबस टाइम टेबल लक्ष्य निर्दिष्ट न थाए कोन पढ़ा जीवो केसम पढ़ा जीवो वी डिड नॉट नो आमे किछि जानि नै we learn from experience हम डेली जाउछे कि सिखले this is experience we learn from the experience so there is no provision of decisive aims of informal education so in terms of planning there is pre-plan and systematic non formal education कोन है this is pre-plan पूर्व योजना हिसाब रे प्रस्तुत होता है रूपरेख बा पाठ्य खसड़ा हो और निर्दिष्ट शृंखलित भाव में सिस्टमैटिक वे रे फॉर्मल एजुकेशन कोन है पाठ्यक्रम प्रस्तुत होता है इन नॉन फॉर्मल कोन है दिस इज आल्सो प्री प्लान ये मध्य प्री प्लान होता है कोडा नॉन फॉर्मल बट इन इनफॉर्मल दिस इज सडनली इनफॉर्मल बा सिचुएशनल यू लर्न सडनली इंट्यूटिवली हठात तुम पढ़ुतो एबार समाधान होनी हठात तुम गोटे माइंड को किसी एक्सपीरियंस पड़े आसला किसी आइडिया पड़े आसला दिस सडनली तुम किसी जिन शिखुछ हठात यू डिड नॉट एक्सप्लेन यू डिड नॉट इमेजिन व्हाट यू लर्न तुम जान ना तो कौन शिखिबो दिस इज सडनली एंड इनफॉर्मल तो कोई से अनौपचारिक भाव में एनीवेयर यू कैन लर्न एंड एंड सिचुएशनल परिस्थिति अनुसार शिखिबा ओके हमें जानी ने जे केते को परिस्थिति हम लाइफ में आसी सो विभिन्न प्रकार परिस्थिति सहित हमें कौन शिखुचे व्हाट यू लर्न फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिचुएशन दैट इज रियल एजुकेशन ये कोची इनफॉर्मल एजुकेशन कोची करिकुलम कोन होता फॉर्मल एजुकेशन रे दिस इज आल्सो पर्टिकुलर फिक्स्ड एंड डिसाइडेड एठी मध्ये पाठ्यक्रम कोन होची निर्दिष्ट पाठ्यक्रम तुमको +2 रे फर्स्ट ईयर रे तुम एई जिंस पढिबो हमर शिक्षा रे तो प्रथम यूनिट अछि तार अर्थ पढिबो तार संज्ञा पढिबो तार संकीर्ण अर्थ व्यापक अर्थ एटा पढिबो तापर तार प्रकार पढिबो तार विभिन्न लक्ष्य पढिबो तार शिक्षार कार्य पढिबो और शिक्षार एजेंसी पढिबो दिस इज फिक्स्ड पर्टिकुलर ओके एंड दिस इज डिसाइडेड आल्सो पूर्व निर्दिष्ट कराइछ इन नॉन फॉर्मल कोन है दिस इज पर्टिकुलर फिक्स्ड एंड डिसाइडेड ये मध्य पर्टिकुलर निर्दिष्ट करिकुलम फॉलो करे फिक्स्ड करिकुलम फॉलो करे as well as it is decided करिकुलम मध्य फॉलो करे बट इन इनफॉर्मल एजुकेशन देयर इज नो करिकुलम कोन करिकुलम कोन आसो तमे रेडियो रु किछि सिखिलो टीवी रु किछि सिखुचो सांगस्थिति मेरु सिखुचो एटा को करिकुलम लिखा जाय जे हम केमिति क्लास रे व्यवहार करबा घरे केमिति दरकार देयर इज नो करिकुलम यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस जनो को ऑब्जर्व करलो सिखु सिखिलो दिस इज एक्सपीरियंस so there is no curriculum for the informal education clear next discipline शृंखला हमें केमिति बिहेव करिबा इन फॉर्मल एजुकेशन इट फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन तुम कौन पढ़िबो कौन नहीं रे सब डिसाइडेड एंड दिस इज आल्सो फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन और निर्दिष्ट शृंखला माध्यम रे ये कार्य करे कॉलेज हो स्कूल हो यूनिवर्सिटी हो देयर इज सर्टेन डिसिप्लिन they have to follow that discipline सेमानं को से निष्पत्ति को बा शृंखला को मानिबा को पड़िबो कोडी ना फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल कोन हुए ये मध्ये निर्दिष्ट किछि रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करे इट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन आल्सो ओके बट इन इनफॉर्मल एजुकेशन देयर इज नो डिसिप्लिन तमे केतेले कोन पढिबो केमिति पढिबो एवं तमे बाटरू घाटरू कोड कोन सिखिलो देयर इज नो डिसिप्लिन ओके यू कैन एक्सेस एनी मोमेंट तमे किछि भी समय किछि सिखि पारो ओके सो व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन माने फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करन फॉर्मल एजुकेशन को माने प्रोवाइड करनती स्कूल प्रोवाइड करनती कॉलेज प्रोवाइड करे
एवं यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करे द फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हम कह परिबा द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ओके बा आनुष्ठानिक शिक्षा हम का कह परिबा ना विद्यालय दिया शिक्षा कॉलेज दिया शिक्षा एवं विश्वविद्यालय दिया शिक्षा हम कह परिबा आनुष्ठानिक शिक्षा कह परिबा क्लियर नेक्स्ट डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग होची कोन नॉन फॉर्मल एजुकेशन गोटे मुख्य इंस्टीट्यूशन इग्नो होची नॉन फॉर्मल एजुकेशन को थ्रू आउट द इंडिया इट एस्टैब्लिश्ड रूल्स एस्टैब्लिश्ड रेगुलेशंस फिक्स्ड करिकुलम्स सब किछि इग्नो कंट्रोल करे एंड व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम इनफॉर्मल एजुकेशन एतरा प्रश्न आसे इनफॉर्मल एजुकेशन नै तेरा कोन प्रकार निर्दिष्ट गोटे इंस्टीट्यूशन न थाए आमे कोड सिखताउ from radio, from TV, from newspaper, from playground, YouTube हम सिखले टीवी रू सिखुचे रेडियो रू सिखुचे खबर का हमको खेल पड़िया मध्ये सिखुचे सांग साथी मेला सिखुचे anywhere we can learn this is informal education and modes of communication कोन there is direct but classroom communication or face to face communication कोडी ना formal education है but in non formal education there is indirect communication एटी कौन प्रकार प्रत्यक्ष जोगाजोग कौन जोगाजोग कर स्टूडेंट किसी डाउट्स अच्छी सी परवर्त समय रे ता डाउट्स नहीं कि संडे जो हमर ओटे एकेडमिक क्लास थिबो जते सब छुआ रहले निज निज डाउट्स पचरे इनडायरेक्ट ओके इनफॉर्मेशन को असला लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस तुम डेली एक्सपीरियंस जा सकुछ दिस इज इनफॉर्मल ओके काना रेडियो रू तुम कौन सिखलो नीति बाणी जेटा पाइलो social media तुम पाइलो एक्सपीरियंस लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ओके so these are the types of education involved in the teaching learning processes clear so next we will discuss about functions of education शिक्षार कार्य शिक्षा कौन सब कार्य करे शिक्षा कौन काम कला हां सेटा हम पढ़ियो शिक्षा तीन प्रकार कार्य करूची का कार्य करूची ना व्यक्ति पे कोन कार्य करूची देश पे कोन काम करूची एवं समाज पे कोन काम करूची ए तीनोटी ब्रॉड कैटेगरी रे हम एंटायर एजुकेशनल एक्टिविटीज को हम कोन करूचे क्लासिफिकेशन कर देउची फर्स्ट हम देखिबा जे व्यक्ति पई शिक्षा कौन सो कार्य करके देखिबा ओके तो व्यक्ति निमंते शिक्षार कार्य प्रथम कौन को शिक्षा इट मेंटेन द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल व्यक्तिर विकास उपरे शिक्षा गुरुत्व दे तार शारीरिक विकास केमिति हो तार मानसिक विकास केमिति हो तार बौद्धिक विकास केमिति हो तार नैतिकतार केमिति विकास हो तार आध्यात्मिकतार केमिति विकास हो दीज आर द ग्रोथ ओके ग्रोथ कंटीन्यूअस इट मेजर्स सर्टेन लिमिट्स ग्रोथ कौन हुए ये स्तर था प्रति बयस अनुसार गोटे छुआर वेट कितना दरकार दिस इज ग्रोथ इट मेंटेन्स ग्रोथ कौन कला मेंटेन करूँ प्रति बयस अनुसार प्रति स्तर अनुसार तार लेवल कौन रहे दिस इज मेंटेनेंस ऑफ द ग्रोथ तार व्यक्ति नेक्स्ट कौन करती डेवलपमेंट ऑफ इनेट पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हम पूर्वकाश विषय आलोचना करथिले जे शिक्षार्थीर विद्यार्थीर व्यक्तिर व्यक्तिगत अंतर्निहित प्रतिभार विकास होची शिक्षार मुख्य कार्य विद्यार्थी पाखे व्यक्ति पाखे कौन सब गुण रही से गुण गुड़िकर विकास करवा अंतर्निहित गुण जोटा कि शिक्षार्थी जानी ना से जो प्रतिभा अच्छी डेवलपमेंट करवा कौन शिक्षार एक मुख्य कार्य तापर कौन कहला ना फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर मु तो पूर्वकाश गोटे कथा कही कौन कही जे इफ मनी लॉस्ट नथिंग लॉस्ट इफ हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट जदि तुम पाखे किसी पैसा नहीं ताले काली मिल जीवो देह खराब अच्छी औषध खाइले डॉक्टर परामर्श कले देह भी भल हो बट जब चरित्र गोटे थर खराब हो गला तुम जिते जहाँ भल कम कर तो लोक तुमको भल कहे ना तेणु कैरेक्टर फॉर्मेशन
केमिति गोटे चरित्रवान मनीष भाव गढ़ि तोलिबा चरित्रवान पे विभिन्न प्रकार गुण रही कौन कौन सब गुण रहा सत्य कहवा दया क्षमा भल पाइबा स्नेह ओके जन जन को दरकार समय साहाय्य करवा सहानुभूति देखा ये सब कौन जिते प्रकार चारित्रिक गुण रहा सहनशीलता ये सब गुणर विकास करवा कौन शिक्षार मुख्य कार्य आउ कौन करे ना प्रिपरेशन फॉर लाइफ व्यक्ति को जीवन निमित्त बंचिया शिखाए हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर ए लाइफ आम केमिति प्रस्तुत रहा दिस इज गाइडेड बाय द एजुकेशन या कौन हुए शिक्षा द्वारा मार्ग प्रदर्शित हुए शिक्षा बाट देखे केमिति बंचो हाउ यू शुड रिएक्ट ए सिचुएशन तुम केमिति प्रतिक्रिया कर गोटे परिस्थिति को गोटे गोटे छुआ था यदि गोटे इनसीडेंट सपोज परीक्षा रिजल्ट खराब है 5टी पिला रिजल्ट खराब है 5टी पिला सेम रिजल्ट खराब को सेम भाव में प्रेडिक्ट करती रिएक्ट करती किए कांद किए बहुत डिप्रेशन हो परीक्षा सरला लाइफ इज नथिंग लेफ्ट इन माय लाइफ किसी लाइफ में मोर बंचनी सब किसी सरीगला किसी एंजॉय करते हो खराब है नेक्स्ट एग्जाम भल कर ये प्रकार सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर सो हाउ यू प्रिपेयर फॉर ए लाइफ केमिति तमे जीवन ପାଇଁ प्रस्तुत हो एजुकेशन प्रोवाइड्स यू फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स शिक्षा तुम कौन करे खाद्य वस्त्र वास्त्र प्रोवाइड कर यदि तुम किसी ना किसी पाठ पढ़ीच देन यू डेफिनेटली गेट एम्प्लॉयबिलिटी किसी ना किसी तुमको रोजगार क्षम मिल जाए सो प्रिपेयर फॉर द लाइफ ये ना शिक्षा नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी तुम व्यक्तित्व विकास करिवारे शिक्षा बहुत मात्रा साहाय्य करे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी माने देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आर देयर किछि किछि छुआ कोन तांदी इंट्रोवर्ट इट्स अ एक्सट्रोवर्ट इट्स आल्सो पर्सनालिटी कि बहुत गपंती बहुत कथा कहबे कि बहुत साइलेंस रहो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी अछि कि भलो एक्सप्रेसिव हे पर कि एक्सप्रेसिव है कि भलो सिचुएशन हैंडल कर पारे कि कर पारे नहीं ये जो डिफरेंट पर्सनालिटी रहिला ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिवारे शिक्षा व्यक्ति को बहुत मात्रा रे सहायता करे ओके तो व्यक्तित्व विकास दिगरे शिक्षा एक मुख्य धारा भाव में कार्य करे सो एजुकेशन कौन कला ना डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस माने आत्मविश्वास सो कॉन्फिडेंस हो हाँ आई कैन डू इट ये जो मु करि परिबी आई कैन डू इट आई विल दिस इज द सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरशीलता बा आत्मविश्वास रो डेवलपमेंट करिवारे शिक्षा कोरे व्यक्ति को सहायता करे सेल्फ रिलायंट निजे निर्भर ऊपर कॉन्फिडेंस एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट तापर आउट कोन काम कला ना शिक्षित को विभिन्न परिस्थिति सहित परिवेश सहित खाप खई करिवारे शिक्षा सहायता करे हाउ इट इज पॉसिबल विभिन्न प्रकार परिस्थिति लाइफ रे आसे आमे गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जाउचे देयर इज डिफरेंट सिचुएशंस देयर इज डिफरेंट एनवायरनमेंट वी शुड एडजस्टमेंट विद दैट सपोज तुमर मैट्रिक पर +2 तुम कॉलेज जॉइन कलो यू हैव टू स्टे एट द हॉस्टल्स और मेस आल्सो तुम हॉस्टल हो मेस रो रह पड़िबो एंड यू विल फेस सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर तुम विभिन्न प्रकार शिक्षार्थी छमान से तुम मिला मिसा हो सो यू हैव टू एडजस्ट विद दैट पीपल तुमको तांग सहित एडजस्टमेंट हो पड़िबो यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ऑलवेज इट विल बी द सेम सब एटा समान नहीं चलिबो इट इज नॉट पॉसिबल सो शिक्षा तुम कौन सिखाए जे हाउ यू शुड एडजस्टमेंट हाउ यू शुड टेक एडजस्टमेंट विद द पीपल विद योर एनवायरनमेंट क्लियर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर तमरो व्यवहार रे परिवर्तन आनी बाउची शिक्षार मुख्य उद्देश्य तुम लर्न करूचो तुम कि शिखुचो एंड आफ्टर लर्निंग योर बिहेवियर विल बी मॉडिफाइड एंड दिस इज पॉसिबल बाय द एजुकेशन एटा का द्वारा संभव शिक्षा द्वारा ही संभव so these are the functions of education towards individual next we will discuss about towards the society समाज पई शिक्षार कोन कर्तव्य बा दायित्वबोध बा समाज में शिक्षा कोन करे से विषय आलोचना करियो
फास्ट शिक्षा कौन करछि ना सोशल कंट्रोल बा सोशलाइजेशन सामाजिक नियंत्रण या सामाजिकीकरण हाउ वी लिव इन ए सोसाइटी आम समाज में केमिति बंचिबा केमिति परस्पर सहित व्यवहार करबा एटा कि सिखाए शिक्षा हमको सिखाए सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण समाज को केमिति कंट्रोल करबा नीति नियम समाज में विभिन्न प्रकार नीति निर्धारण रही है तो दिस इज द सोशल कंट्रोल एंड दिस इज पॉसिबल बाय एजुकेशन क्लियर नेक्स्ट सोशल वैल्यूज क्रिएशन सामाजिक मूल्यबोधर सृजन व सृष्टि सामाजिक मूल्यबोध माने समाज आम जो विभिन्न प्रकार मूल्यबोध रही जमीक परस्पर प्रति सहानुभूतिशीलता परस्पर सौहार्दपूर्ण भातृभाव भावनार सृष्टि परस्पर दुख सुख भागीदारी ये जो विभिन्न प्रकार सामाजिक मूल्यबोध रही ए सब मूल्यबोधर विकास करने हूँ शिक्षार लक्ष्य आउ कौन शिक्षा करे ना इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस कथा कहे समस्त समान अधिकार एवं समस्त सामाजिक न्याय प्रदान करे एवरी ह्यूमन हैव सर्टेन डिग्निटी समस्त मर्यादार सहित बंचार अधिकार रही शिक्षा प्रोवाइड करे ओके एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विभिन्न अनुभूतिर पुनर्गठन यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस after experiences by one you get knowledge so education provides you the experiences construction okay next development of ethics and moral values one of the important functions towards the society तम भितर morality एवं ethics so what is ethics माने मूल्यबोध अर्थात what is good and what is wrong so ethics is which is good and which is wrong भलो कौन ठीक कौन ए विषय डिसीजन नबा ताको डिस्क्रिमिनेट करबा डिफरेंशिएट करबा एडा भी कौन शिक्षार कार्य केउ परिस्थिति केउ प्रकार डिसीजन नबा एडा भी शिक्षार कार्य दिस इज एथिक्स आ गोटे होला कौन ना मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्यबोध नैतिकता कौन आम नीति दिन में आम जो काम करूचे केते दूर एटा मोराल्स केते दूर हम नैतिकता पूर्ण दिस इज मोरल वैल्यूज फॉर एग्जांपल तुम स्कूल को जाउछो टीचर आसले तन प्रणाम करतो देयर इज नो एथिक्स तुम चिंता करछो कि मैं प्रणाम करा ठीक कि भूल दिस इज मोरल्स एटा नैतिकता शिक्षक आसले प्रणाम करियो घर के गार्डियन आसले बा के कुया आसले हम तांको प्रणाम करूछे रेस्पेक्ट करूछे दिस इज मोरल्स शिक्षकंकर समाज रे ए सब भावनार विकास करे आ कौन शिक्षा कर्तव्य रहा शिक्षा कौन कार्य करे ना देश कौन शिक्षा कार्य कर एफर्ट्स द फंक्शंस टुवर्ड्स नेशन देश प्रति शिक्षार कार्य कौन शिक्षा कौन करे ना क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल फीलिंग्स इंटरनेशनल गड़बड़ अच्छे छुआ ये क्वेश्चन करवा इंटरनेशनल आंतर्जातिक सद्भावनार सृष्टि आंतर्जातिक सद्भावना माने आमे आम देश को भल पाओ ठीक अच्छे आज इंडियन भारत हिसाब से वी लव आवर कंट्री आम आम देश को भल पाओ बट इट डज नॉट मीन वी हेट अदर कंट्रीज आम अन्य देश को घृणा करिबा आज इंडियन वी ऑल बिलीव इन वन अर्थ वन फैमिली संपूर्ण विश्व गोटे परिवार वसुधैव कुटुंबकम तो समस्त देश प्रति आम जो सद्भावना रखिले आमर देश बढ़ समग्र विश्व उन्नति हेब तो देशर गठन में शिक्षा यही प्रकार कार्य निर्वाह करे ओके नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज आमे केमिति विद्यार्थी मध्य नेतृत्व नेबार दक्षता वृद्धि करबा एटा का द्वारा संभव शिक्षा द्वारा संभव शिक्षा तुम कौन शिखाए how a leadership quality will develop within the children पिला मान मध्य केमिति नेतृत्व नेबार दक्षता वृद्धि हो ओके सो दिस इज पॉसिबल बाय द एजुकेशन नेक्स्ट नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी जातीय सहमति एवं एकता जातीय सहमति मान इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स भारत रे 28 राज्य अछि
and all the states people have their different way of living. ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି we all are Indian. ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟି ଭାବନା ରହିଲା, this is development of unity. It is possible only through the education. এটা কাହା দ্ୱାରା ସମ୍ଭବ? ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। And another one is awareness about environment. ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା। ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି and biodiversity protection. ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେମାନେ ପାଇଁ କେମିତି ଷ୍ଟୋର କରିବା, ଆମେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆୱାରନେସ୍। ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା। କେମିତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, ଆମେ କେମିତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିପାରିବା, এটা କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ? ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ପଢୁଛେ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପଢୁଛେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କଣ କରେ? ଦେଶ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। Okay, so in these three category we have discussed about the functions of education towards individual, towards society and towards the nation. In details what we discussed today, ଆମେ କଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ? ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଶିକ୍ଷା କେତେ ପ୍ରକାର, କଣ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। So I hope this class is very useful for you. ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ତମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତମ କ'ଣ ହବ, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା related to your education, you will get the first notification. Okay, and ଯଦି ତମର ନୋଟ୍ସ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରେ তুমি ଜଏନ୍ କର ଏବଂ ତମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ସେଠି ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।